So let me put it on recording. Okay. Now set theory, as you know that most of you have already done, right? Even I have finished it in your batch. So mainly we'll be focusing on questions, right? Previous year IIT JEE questions and previous year NDA questions. Let me revise you a few things before I start with the class, right? For example, let's say you have three things, right? Three things: P, Q, and R. Okay. Listen very carefully. Let this denote area 1, area 2, area 3, area 4, area 5, area 6. Okay, that is area 6. Area number 7, and generally this is taken as the universal set, right? So this is area number 8. Fine, that is outside PQ and R. That is outside PQ and R. Now let's go for a question answer round. Let us go for a question answer round. बेटा प्लीज जाओ यहाँ से, मैं पढ़ा रहा हूँ आगे बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ. जाओ, I will come to you. जाओ, please go. Okay. There is one very general problem that we face from work from home, right? He is my naughty son and he is time and again disturbing me. जाओ बेटा, I will come to you. जाओ. 8:30 आऊँगा. So before I throw the questions over you, let me tell you a few things. Like if you get a word, something like this, if they say P and Q, that simply means they are talking of area number 2 and 5. 2 plus 5, right? If they say P and Q, but not R, that means they're talking of area number 2. Okay, you should understand these things. If they say P and Q and R, right, that means they're talking of area number 5. If they say neither J, मैं पिटाई कर दूंगा, please. Neither P nor Q nor R, that means they're talking of area number 8. ठीक है. तो वेन डायग्राम पे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें इन सब लॉजिकल टर्म्स की आपको जरूरत पड़ेगी. ओके, यू वुड नीड ऑल दिस थिंग, and but not, or nor, right? Okay, one more thing. If they say P or Q, so you understand, right? And is for intersection and or is for union. तो अगर P और Q कह रहे हैं, that means you need to find the sum of all the areas that comes under P or Q. That means 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. But अगर यहीं पे वो ये कहते हैं, जय, please, P or Q but not R, right? But not R. Now they're talking of 1 plus 2 plus 3. ठीक है. तो ये जो चीजें हैं, ये जो लैंग्वेज है, ये आपको समझ में आनी चाहिए. कंपटीशन में ये लैंग्वेज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, एंड यू मस्ट बी कंफर्टेबल इन ऑल दिस. ओके, वंस यू आर कंफर्टेबल इन दिस, एंड लेट मी रिमाइंड यू अ फ्यू मोर थिंग्स जो आपको शायद पता ही होंगी, राइट? जैसे A union B, number of A union B. I'm sure you must be remembering this is number of elements in A, number of elements in B, number of elements in A intersection B. And when we have three things, right, when we have three things, A, B and C, in that case that will be number of intersection of A, B plus C minus, जाओ अभी पढ़ाने दो, जाओ प्लीज गो. सो ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए, राइट? एक और चीज मैं आपको बताऊं,
अगर आपके पास कोई सेट A है and let's say the number of elements in A, let's say this is 3, and there is another set B that has, let's say, 4 elements, right? That has got 4 elements. Now if I ask you what is the number of elements in the Cartesian product of A and B, I hope you remember that is going to be 3 into 4, that is 12. And now if I ask you how many subsets of A cross B is possible, how many subsets of A cross B is possible, remember that it is always 2 raised to the power 12. ठीक है, it is 2 raised to the power 12. ठीक है, जितने भी यहाँ पे वैल्यूज हैं, अगर यहाँ पे n होता तो it is 2 raised to the power n. And also remember that one of them is 5 and different possibilities are there. ठीक है, so with this, let us start with the question answer round, right? I'm sure we'll have some good questions to discuss. Before I start with the question answer round, I'll put my phone on silent, right? ये फोन ले जाओ बेटा, नीचे मम्मा को दे दो, प्लीज जाओ जाओ फटाफट. Let's start with the questions, children, right? I'll give you a basic question and you can use your mic to answer that, right? पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ इसमें. इसके आगे क्वेश्चंस के लिए चलो इससे भी इजी क्वेश्चन लिख देता हूँ. दिस वन, राइट? दिस वन इज इवन इजियर. फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी वाला क्वेश्चन मैंने अपने लिए सेलेक्ट किया, राइट? जो थोड़े बेटर क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको दे दूंगा. So a survey on a sample of 25 cars being sold at a local auto dealer is conducted to see which of the 3 popular options. What are the popular options? Air conditioning, radio and power windows were already installed. The survey found, ठीक है, this was the survey report. ये जो नीचे है ये survey report है. See, the moment I get this kind of question, what I do is I straight away make a Venn diagram, right? This rectangle comprises of the universal set, यानी जितना भी survey हो रहा है total, that is this total thing, ठीक है? अब इसमें 3 चीजें हैं, तो I'll draw 3 circles. I'll draw 3 circles. Okay, 2 circles are fine. One is slightly damaged. That is okay. Now AC हमारे पास total कितने हैं? 15. I'll write 15 here instead of in front of AC. Then we have 2 had air conditioning and power windows, but no radio. See, if this is AC, this is radio, and let this be power window. Okay. तो अब इस लाइन को मैंने बोला था ना अभी भी तुम्हें एक चीज बताई थी कि इन चीजों को तुम्हें समझना है. क्या कह रहे हैं? 2 had air conditioning and power window but no radio. So had it been only air conditioning and power window, right, only this part, so this sum would have been 2. But now they are saying but no radio. That means this part is gone. So only this area is what they're talking of. Okay. 2 had air conditioning and power window but no radio. ठीक है, आगे देखते हैं. 12 had radio. Okay, 12 had radio. That means the total number that is inside the radio thing is 12. Okay. 6 had air conditioning. Okay, अब 6 had air conditioning, ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा. And radio but no power windows. Okay, 6 had air conditioning and radio but no windows. That means they're talking of this area which is 6. Okay. आगे देखते हैं. 11 had power windows. Now when they say simply power window, that is the number that you are going to write. Okay, so 11 had power windows. 4 had radio and power window. 4 had radio and power window. Now when they say radio and power window, we should understand that the sum of these 2 things is equal to 4, right? This plus this is equal to 4. Okay. 3 had all the 3 options. Now this is a very good data, right? 3 had all the 3 options. मतलब ये जो middle में जो चीज है ना, which is the intersection of all the 3, that includes 3. Now बहुत easy हो गया question. क्यों? क्योंकि ये तुम्हें 3 पता लग गया और इसका sum तुम्हें 4 मालूम है. So this is going to be 1. ठीक है? Because 3 plus what is equal to 4, so that is 1. हमने इस तरीके से इसको decode करा. यहाँ पे ये 6 पहले से दे रखा है. इन सबका sum 15 होना चाहिए. 15 में से 11 मुझे यहाँ मिल रहा है तो 4 ये रहा. ठीक है,
यहाँ पे टोटल 12 है, 12 में से 10 में यहाँ पे देख रहा हूँ, so 2 ये होगा, and here we have 6. 6 में से मैं क्या ऐड करूँगा so that I get 11, definitely 5. So overall I have everything with me now, right? But what is the question? What is the number of cars that had none of the options? मतलब we need to find the number of cars जिसमें ये तीनों चीजें नहीं है. Okay, so let us find the number of cars जिसमें ये तीनों चीजें हैं, right? So the easiest way is this total is 15. 15 plus 5 is 20. 21. 21 plus 2 is 23. 23 is the total number of cars that has at least one of the three options. Out of 25, 23 has something. So definitely 2 is the number that they're looking for. How many of you understood this explanation? Please raise your hand. Sir, please explain again last part. I will. Beta, please, please. Right. So I'll explain this one more time to you. ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ तुम्हें so ये only the last part, right. After we have written all the numbers. Right. Now once you know that 23 is the number of the total number that is lying inside the circle, that means they have either AC or radio or power window, right? So that is 23. If the total number of cars surveyed is 25, out of which 23 had something, that means there are 2 cars which are lying outside these circles. And what is those? They are the cars, they have none of the options. And that is why the answer is what? 2. Anshuman, is it okay? Yes, sir. Right. Now it's your turn. Try this one. I'm solving it. Please look here, everyone. Now, I told you the moment you get such questions, quickly try to make a good Venn diagram, right? As many attributes, as many circles. So here we have 2 attributes. I'll draw 2 circles, right? I'll draw 2 circles. Total, we have 150 students, and they're talking of 2 subjects, mathematics and chemistry, right? Mathematics and chemistry. The problem is that they're also talking of pass and fail, right? So we have to be careful, right? अगर वो सिर्फ एक डेटा देते ना तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बट क्योंकि उन्होंने मिक्स कर दिया डेटा को, कभी पास बता रहे हैं कभी फेल बता रहे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस. ध्यान से देखो कैसे इस क्वेश्चन को करना चाहिए था. देखो जिसका भी डेटा तुम्हें ज्यादा है ना, तुम उसको उस चीज को यूज करोगे. अगर मेरे पास नंबर ऑफ पास का डेटा ज्यादा है तो मैं उसको यूज करूंगा, नंबर ऑफ फेल का डेटा ज्यादा है तो मैं उसको यूज करूंगा. ठीक है, जो भी डेटा आपको ज्यादा है वेन डायग्राम में आप उसको ही रिप्रेजेंट करो. बी वेरी केयरफुल एंड लिसन वेरी केयरफुली. 150 students, 50 passed in mathematics. Okay, 50 passed in mathematics. That means 100 failed in mathematics. Very obvious, no? Out of 150 people, 50 passed in mathematics. That means the remaining failed in mathematics. Okay, 40 failed only in chemistry. Now this data tells us that 40 failed only in chemistry. That means chemistry में fail होने वाले कुछ और भी होंगे जो साथ साथ मैथ्स में भी फेल हुए होंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ फेलियर्स इन केमिस्ट्री इज 40 प्लस. ओके, दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिकी लाइन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. 40 failed only in chemistry, 20 failed in both the subjects. Now that is a very good data. अब यहाँ तक मुझे इतनी बात तो समझ में आएगी कि फेलियर्स का डेटा ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे फेलियर्स का ही वेन डायग्राम बनाऊंगा. I'll draw it for the failures. So 20 failed in both the subjects and 40 failed only in chemistry. Now that is a very good number, children. Why so? You get to know the total number of failures in chemistry, and you already knew then the total number of failures in mathematics, which is 100. Now, the moment you get this, this is definitely equal to what? 80. Out of 150, 80 people failed only in maths, 20 people failed in chemistry as well as maths, and 40 failed in only in chemistry. So overall, you have 140 people who have failed in one of the subjects, at least one of the subjects. That means there are 10 people who have passed in both the subjects. They're lying outside the failure circles. Okay, let me look at the question now. How many students passed in both the subjects? Very easy. How many students passed in exactly one subject? सिर्फ एक सब्जेक्ट में कितने लोग पास हुए हैं? तो ये तो बहुत इजी है ना बेटा. ये 80 लोग सिर्फ एक में फेल हुए और ये 40 लोग सिर्फ एक में फेल हुए.
मतलब ये 120 लोग वो हैं जिन्होंने एक में ही फेल हुए, यानी क्वाइट ऑब्वियस दूसरे में तो पास हुए होंगे. दैट मींस these are 120 people who have passed in exactly one subject. Okay. Third one, how many students failed in at least one of the subjects? Definitely the answer is 140. At least one subject क्या मतलब है? Either they have failed in one subject or they have failed in both the subjects. Right? मेरे फैमिली में ऐसे कितने लोग हैं जो एटलीस्ट एक चपाती खाते हैं, तो मैं उनको भी काउंट करूंगा जो एक खाते हैं, जो दो खाते हैं, जो तीन खाते हैं, जो चार खाते हैं. ठीक है, so that should be very clear. So the answer for this is 140. Is it okay everyone? Let me see your hands fast if it is clear. Gradually the level, the type of questions would change. Okay, gradually the level of question, the type of questions would change. If anyone has any doubt, please discuss it right away. Okay, I'll proceed then. So the answers were 3, 2 and 4. मैंने answers भी लिख दिए थे, right? 3, 2 and 4. देख लेना आंसर हमारा मैच हो गया नहीं हुआ वो तुम देख लेना. मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे सॉल्व किया था, तो आप देख लेना. 3, 2 and 4, that is the answer. Okay, proceeding ahead. ये भी हमने सॉल्व कर लिया. Done. Now these are previous year questions of NDA exam. ठीक है, NDA के previous year questions है. We'll start with NDA and we'll end with IIT. ठीक है, NDA से शुरू करके और फिर हम IIT JEE के क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, NDA क्वेश्चंस स्लाइटली JEE के रिस्पेक्ट में इजियर होते हैं, इसलिए मैंने NDA पहले रखा था. ठीक है, लेट अस सी. द फर्स्ट वन इज अ वेरी सिंपल. इसमें दे एक्चुअली दे टेस्ट यू ऑन योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, बट आई एम श्योर वो भी आपको इजी ही लगेंगे. आओ देखते हैं. 36th क्वेश्चन, which one of the following is a null set? Right, null set का मतलब सिंपल सा ये होता है that either you represent it with simple braces, empty braces, or you represent it with 5. ठीक है, D. Absolutely correct. Right, ये हो नहीं सकता because इसमें ये सिंगलटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है 0. ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं सेट के अंदर सेट, दिस यूजलेस थिंग. बेवकूफ बना रहे हैं, ये भी बेवकूफ बना रहे हैं. अगर मैं डी, हालांकि जब मैंने 3 ऑप्शंस मार्क कर दिए कि गलत है तो चौथा सही होगा ही होगा. ठीक है, तो बिना चेक किए मैं डी वैसे भी मार्क कर सकता हूँ without even checking if I have cancelled 3 options. This method is called method of elimination. Very very useful in competitions. Very useful method of elimination. You eliminate the options, right? And when you know in MCQ you have only one correct answer, if you have eliminated the other options, definitely the remaining option is the correct answer. So you method of elimination में D मुझे बिना चेक किए हम लोग चेक कर सकते थे, that is the correct answer. बट अभी फिलहाल देख भी लेते हैं क्या बोल रहे हैं. X such that, ये जो लाइन है ना, ये such that के लिए होती है. such that के लिए ये कोलन भी लिखते हैं. ठीक है, even this is such that. ठीक है, तो X such that x square plus 1 is equal to 0 where x belongs to real number. Now you know that this x square is equal to minus 1, so definitely x is equal to what? Iota, under root of minus 1. Okay, as x is equal to under root of minus 1, which is iota, which is not real, hence definitely this is the answer. Okay, so I hope that was easy and all of you understand that. Coming to the second part of the question, right, it is again a very basic question. If A is a subset of B, right, A is a subset of B, fine, right, subset can be written like this or it can also be written like this. That means either it is smaller than B or it is equal to B. That means that. Then which of the following is correct? See, when they say A raised to the power C, that means they're talking of A complement. We can also write it like this. Okay, A complement. अभी जिन लोगों ने सेट मेरे साथ करा है, मनन एंड अर्पित, they understand what is the meaning of A complement, and I'm sure the others also understand. If this is A complement means everything which is outside A. ठीक है, that is A complement. ठीक है, तो यहाँ they are saying कि A अगर B का सबसेट है तो बताना है कि A और B के कॉम्प्लीमेंट में क्या रिलेशन होगा. बेटा बहुत सिंपल है ना. अगर D part, see, इससे तुम्हें सिर्फ ये पता लगता है कि B is larger than A, yes or no? B is larger than A. अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा यानी कि इसके अपोजिट की बात करूंगा तो क्वाइट ऑब्वियस A का कॉम्प्लीमेंट वुड बी लार्जर देन B का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो A का कॉम्प्लीमेंट वुड बी द सुपरसेट ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट. यानी इसमें मैं आंसर क्या मार्क करूंगा? ऑप्शन नंबर बी. B का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, yes sir. Shall I give some example या समझ में आ गया? Sir, आ गया समझ में.
Everyone? Yes, sir. That's okay. That was easy, right? Next question. If A that comprises of 1, 3, 5, 7, there are 4 elements, then what is the cardinality? Cardinality आपको ध्यान होगा. Cardinality क्या होती है? Number of Cardinal elements. number. Yes, number of elements. जैसे the cardinal number of A is 4, right? Cardinality of the power set of A. That means B, sir, option B. option D नहीं होना Sir, चाहिए. B. B. चलो देखते हैं. राइट, सिंपल सी बात है. सिंपल सी बात है. 2 raised to the power n होता है. यहाँ हमारे पास 4 एलिमेंट्स है. 2 raised to the power 4 16 हो जाएगा. तो इसकी कार्डिनैलिटी मेरे ख्याल से तो C होनी चाहिए. ठीक है, इट शुड बी C. अभी आंसर हाँ 16 डेफिनेटली. व्हाई? बिकॉज आप इन्होंने ये नहीं कहा ना कि नॉन वाइड हो गए या फिर वाइड होंगे, कुछ भी नहीं कहा. मतलब सारी चीजें पूछ रहे हैं. सारी चीजें पूछे तो 2 की पावर n इज द स्ट्रेट अवे आंसर. अभी इसमें और अच्छे क्वेश्चन भी तुम्हें इस टाइप में मिलेंगे आगे. बी वेरी प्रिपेयर्ड. राइट, दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन. Okay, question number 39 again is a very straightforward question. जिसको भी basic concepts algebra of Venn diagram, algebra of sets उसने ठीक ठाक से पढ़ रखा. मैं erase कर रहा हूँ. ठीक है, राइट साइड में erase कर रहा हूँ, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन. सो क्वेश्चन नंबर 39 अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो बहुत ही सिंपल है. इन्होंने बोला which of the following is are correct. तो let me remind you the LHS of the first statement. Question number 39 में there is saying that B intersection C, right? And if you remember it correctly, it is nothing but A union, right? यहाँ तुम्हें क्या मिलता है? यहाँ तुम्हें मिलता है A union B, right? That is what this is the distributive law of sets. ठीक है, A union C. So definitely ये वाली चीज तो exactly गलत हो गई ना. The first thing is gone. Similarly, अगर मैं इसका second part देखता हूँ, statement number 2, that is saying A intersection of B union C. Again, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Will have Distributive. yes, exactly. इन्होंने उल्टी चीज लिख रखी है. So definitely Yes, both the statements are wrong and hence we'll go forward option number D. D. Neither 1 nor 2. ठीक है. Now coming to question number 40, I want you to try this. It's a very simple question और ऐसे कई क्वेश्चन आप कर चुके हो. Please try and tell me the answer. Question number 40, fast. जल्दी बताओ क्या आंसर है. 41st का A है. Which one of the following is an example of non-empty set? Set of all even prime numbers, right? All even prime numbers, right? अगर आप even prime numbers की बात करो तो आपके पास even prime number में सिर्फ एक चीज होती है, that is 2. यानी अगर मैं A की बात करूं तो A में तो मेरे पास ये कंडीशन है. ठीक है, जबकि ये क्या बोल रहे हैं? नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट तो यही है. अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये बोल रहे हैं इज रैशनल, ये यहाँ तो ये √2 हो गया, ये तो गलत हो गया. बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया. बी ऑप्शन इज गॉन, राइट? देन सच दैट इज अ नेचुरल नंबर एंड साइमल्टेनियसली नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, राइट? एक बोल रहे हैं x इज लेस देन 8 और दूसरा बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 12. पॉसिबल नहीं है ना. साइमल्टेनियसली पॉसिबल है कि हम कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ लें जो 8 से तो छोटा हो और 12 से बड़ा हो. इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल. तो ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. ठीक है. And the fourth part is a common point between two parallel lines. Again, a useless thing. Two parallel lines, they do not have any common point, right? They do not intersect. So definitely, अगर मैं method of elimination भी करता हूँ तो option number A is the only choice. और otherwise भी हमें समझ में आना चाहिए that 2 is the only prime number which is even number. Rest all the prime numbers are odd. So that was again easy for you. Answers लिख लेना. अभी अगले पेज पे answers आएंगे, मैच करेंगे हम लोग. ठीक है, let us match that. So 36 का D, 37B, 38C, 39D, 40C, 41B. सारे सही थे? Yes, sir. 40 का C सबका आ गया था. Yes. कोई, because that is the only question जो मैंने सॉल्व नहीं किया, because ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसलिए मैंने सॉल्व नहीं करा. So moving ahead. Okay, now this was asked in 2014, right? 2014. Would you like to try this या सॉल्व करूं? चलो ट्राई कर लो, इजी है, ट्राई कर लो. प्लीज ट्राई. दैट मीन्स आई शुड डिस्कस दिस वन. ठीक है, देखो भाई, इन अ सर्वे मैंने आपको ये बात बार बार बताई. द इजीएस्ट वे टू डील विद दीज क्वेश्चंस इज डेफिनेटली वेन डायग्राम. ठीक है, total 25 students were surveyed, so the total I would write here. It was found that 15 have taken mathematics, maths, physics, chemistry. 3 things are there. Let's draw 3 circles. Let us draw 3 circles.
मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नाउ जो भी चीज जहां मिलेगी फटाफट से उसको रिप्रेजेंट करने की हैबिट होनी चाहिए। एक चीज ध्यान रखना बेटा, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, whenever you deal with these kind of questions which is lengthy, क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से पढ़ो कि उस स्टेटमेंट को तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट? जनरली ऐसा होता है कि बच्चे एक बार पहले पढ़ते हैं, फिर वेन डायग्राम पढ़ा बनाते हुए उसको दोबारा से पढ़ते हैं। डेवलप अ हैबिट दैट यू आर रीडिंग इट वंस एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग इट देन एंड देयर, ठीक है? ध्यान से देखो, मैं करके बताता हूँ। 25 स्टूडेंट्स मैंने ऊपर लिखे, मैंने सब्जेक्ट्स फटाफट से आइडेंटिफाई कर लिया था विदाउट पूरा पढ़े हुए, सिर्फ मैंने सिर्फ देखे कितने यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? 15 हैव टेकन मैथमेटिक्स, मैं स्ट्रेट अवे अब यहाँ पे अलग से नंबर्स जहाँ पे मुझे जो पता लगेंगे मैं लिखना शुरू करूंगा। 12 हैव टेकन फिजिक्स, दिस इज 12। 11 हैव टेकन केमिस्ट्री, 5 have taken chemistry, mathematics and chemistry. Now mathematics and chemistry, we understand it is the sum of these two things. We don't know total अभी कितना है, total 5 है, यहाँ पे कितना और यहाँ पे कितना, we don't know, कोई बात नहीं। 9 have taken mathematics and physics. Mathematics and physics, मतलब this plus this is 9, okay. 4 have taken physics and chemistry. Physics and chemistry वाले कितने हैं, ये 4 है, ठीक है। 3 have taken all the 3 subjects. That is a very very useful information. This is 3. The moment we get to know that is 3, this is 2, this value becomes 6, this value becomes 1, and everything is very very clear children, right? कितना हो गया ये 15 में से तुम्हारे पास ये 9 और ये 11 आ गया तो ये 4 हो गया। यहाँ पे 12 में से ये 10 दिख रहा है तो ये 2 हो गया, ये 6 है तो यहाँ पे ये आपके पास 5 आ गया, राइट? सर्कल के अंदर कितना है ये सब कुछ तुम्हें पता लग चुका है। दिस इज 15, दिस वन इज 15, 15 plus 5 is 20, 20 plus 3, 23, 23. That means there are two things which are lying outside the circle. I'm sure we can answer all of them now. Let us see. The first one, the number of students who have taken only physics. Only physics वाले number हमें साफ साफ दिखने चाहिए, it is 2, right? Only physics is this number 2, so the answer is 2. Now the number of students who have taken only 2 subjects, right? 9. Who have taken only 2 subjects, 2 subject ही लिए हैं, right? तो 2 subject वाले कितने हैं? This is 6 plus 2 plus 1, this is 9, it is coming out to be 9. So 42A, 43C. Any problem, anyone? No, sir. The most important thing in dealing with such questions is definitely only one thing, that is to draw the Venn diagram, right? That is very crucial children, okay? So 42A and 43C, that should be the answer. That is the answer, okay? Proceeding ahead. This is again one question and I want you to try this. I give you 1 minute for this. Chalo 90 seconds. Try karo. Resume recording. Okay. Now you have in all 1000 people, right? 1000 numbers and all of them are natural numbers. Multiples of 10, multiples of 15 and multiples of 25, right? 10 वाले multiples, 15 वाले multiples और 25 वाले multiples. मैं इसको M25 बोलता हूँ, इसको M10 बोलता हूँ और इसको M15 बोलता हूँ। और देखते हैं ये नंबर्स हमारे पास कितने हैं। इस क्वेश्चन को कैसे आप क्विकली कर सकते थे, मैं उस पर आऊँगा, ठीक है? अगर किसी का भी मेथड थोड़ा और बेटर हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट, यू कैन डिस्कस, ठीक है? There's no harm in learning from anyone among you, ठीक है? तो ध्यान से देखो, M10 जब मुझे निकालना है, कुछ नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे 1000 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है 10 के इतने ही मल्टीपल्स होंगे। कितने मल्टीपल्स होंगे? 100. So this number is coming out to be 100. Similarly 1000 को जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 15 मिल जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? ये 90 से जाएगा और यहाँ पे फिर से 6 आ जाएगा। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी 66. सिमिलरली ये आपका कितना हो जाएगा? शायद 40, ठीक है? तो बड़े आसानी से हमें ये वैल्यूज तो मिल जाती है, बट अभी बात नहीं बनेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये तीनों जो भी नंबर 10 से, 25 से और 15 से, तीनों से डिवाइड होंगे वो यहाँ बीच में आएंगे, राइट? तो इनका क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा?
इसका एलसीएम हो जाएगा 5 का हाईएस्ट पार, राइट, 2 की हाईएस्ट पार और 3 की हाईएस्ट पार, जो इन तीनों में अवेलेबल है वो ये है। दैट मीन्स 25 2s is 50 and 53s is 150, यानी 150 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे हमारे पास 1000 तक। अब देखना ये कि 150 के कितने मल्टीपल्स हैं, तो साफ साफ मुझे दिख रहा है 6 मल्टीपल्स हैं, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। 15 6 is 90, so 156 is 900, ठीक है। तो 6 मल्टीपल्स है, यहाँ मैंने 6 लिखा। अब क्या देखूंगा मैं देखूंगा 10 और 25। तो 10 और 25 का मैंने एलसीएम लिया, 10 25 का एलसीएम कितना हो गया 50। तो 50 के कितने मल्टीपल्स दिख रहे हैं 20, ठीक है, 20 दिख रहे हैं। 20 में से 6 यहाँ पे हैं, तो यहाँ कितने बच गए बेटा 14। सिमिलरली 10 और 15, 10 और 15 व्हाट इज द एलसीएम 30, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा 30 के कितने मल्टीपल्स हैं, तो 1000 को क्यों ना हम लोग 30 से डिवाइड कर लें, ठीक है। दैट इज कमिंग आउट टू बी 3 times 90 and 3 times again, that is 33। 33 में से 6 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला नंबर कितना होगा, डेफिनेटली 27। नाउ आई विल टॉक ऑफ 25 and 15। 25 और 15 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 75, राइट। 25 and 15 the LCM would be 75, तो 75 तक, ओके। सो 1000 को मैं अगर 75 से डिवाइड करूं, व्हाट डू आई गेट, 1 से गया, यहाँ पे मेरे पास 250 आया, कितने से जाएगा ये 300 हो जाता अगर मैं इसको 4 टाइम्स, तो मेरे ख्याल से 3 टाइम्स हो जाना चाहिए ना, 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। 3 टाइम्स इज 225। तो ये मेरे पास टोटल नंबर कितना हो गया, ये 1 और 3 13, इट इज कमिंग आउट टू बी 13। 13 में से 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना होगा, क्वाइट ऑब्वियस ये नंबर मेरे पास 7 होने वाला है। सो आई हैव एवरीथिंग नाउ, सारी चीजें आ गई। अब सिर्फ देखना ये है कि सर्कल के अंदर हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर्स कितने हैं। तो ये टोटल 100 है, मैं सिर्फ ये वाले नंबर्स काउंट करूंगा, ठीक है। यहाँ जो मेरे पास नंबर्स हैं मैं सिर्फ इनको काउंट करूंगा कि ये कितने हैं। 40 है, 40 बेसिस 20 और ये 27, राइट। 27 अगर मुझे यहाँ दिख रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी 13। यहाँ टोटल 66 है, 66 में से मुझे ये 33, राइट, 33 प्लस 7 40 यहाँ पे दिख रहा है, सो दिस नंबर इज गोइंग टू बी हाउ मच 26। So overall, how many numbers are there that is lying inside the circle? It is 100 for maths, then 26 this and 20 ये, यानी कि 46। टोटल हमारे पास 146 ऐसे नंबर्स हैं 1000 तक जो यहाँ पे इनके मल्टीपल्स हैं। तो हमसे पूछा गया था कि कौन से मल्टीपल्स नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना, 1000 में से 146 सब्सट्रैक्ट कर दो, डेफिनेटली द आंसर इज 854। Any different answer, anyone? You are allowed to suggest. Any different method that you have chosen, anyone? Is it understood by all of you? Raise your hand if it is understood. Show me your hands if it is understood, all of you. That is okay. So I'll proceed to the next question now. B is the answer, 854. We have already achieved that. So moving ahead. Now, see, although this is a question of probability, but I'm sure you now, after discussing so many questions, you understand that it has definitely got more to do with sets, right? Probability आपने ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ी नहीं है, right? Especially class 11 children who have just started, right? Probability जो आपने बच्चों ने पढ़ रखी थी वो यहाँ पे भी है. What? That probability of any event is equal to number of favorable events, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। हालांकि प्रोबेबिलिटी में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ इस क्वेश्चन के लिए इतनी नॉलेज काफी है प्रोबेबिलिटी की। बाकी इसमें सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। चलो आई विल वेट फॉर 1 मिनट, देखते हैं आंसर किसका आता है, जस्ट 1 मिनट। चलो, क्योंकि तुम लोगों के आंसर्स आने लग गए तो मैं फटाफट से क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से इसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, अगर इन केस किसी का रह गया। 60 students total हैं, NCC and the other is NSS, right? NCC and NSS। 2019 IIT मेंस का क्वेश्चन है ये, 12 जनवरी सेकंड स्लॉट में हुआ है, right? It's an actual question this year, so very easy question, right?
This is coming out to be 40. This is coming out to be 30, right? And 20 opted for both. 20 opted for both. If one of these students is selected random, then the probability that the student selected has opted for neither NCC nor SS. Very very easy question, no? अगर ये total 40 हमें मालूम है तो ये 20 हो जाएगा, total 30 मालूम है तो ये 10 हो जाएगा. Total हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कितना, ये 50 inside the circle, that means 10 is lying outside the circle. They're talking of this 10. So favorable case is what? 10. And total case is what? 60. So the answer definitely is 10 over 60, which is 1 by 6. Okay? So that is the answer. Very good. 20A option. Next question. थोड़ी सी इसमें printing बहुत अच्छी नहीं हो पाई, मैं scan कर रहा था, right? But I hope I'll help you with this. Set A, it's a 2015 mains question, right? If A and B are two sets containing 4 and 2 elements, right? This is 4 and this is 2 elements respectively, then the number of subsets of the set A and A cross B. Now this is Cartesian product, which I told you 219 in the very beginning. Did you solve that question earlier? Yes sir. अच्छा अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है फिर तो. Each having at least 3 elements are 11th में. okay, that is absolutely fine, right? Each having at least 3 elements. ठीक है, कम से कम 3 एलिमेंट सब में होने चाहिए. ठीक है आयुष, टेल मी हाउ डिड यू सॉल्व इट? व्हाट इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग? सर 219. व्हाट इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग? सर इसमें आपने बताया था जो थर्ड जिसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं उसको जैसे शुरुआत से लिखते हैं ना, तो उसी हिसाब से मैंने कहा था. और जो 2 के हैं वो वाले माइनस कर देंगे, 2 और 1 वाले. तो में से देखो मैं बताता हूँ. तुम्हारा एक तो पता नहीं ये माइक सही से काम क्यों नहीं करता. तुम जब बोलते हो ऐसा लगता है कोई रोबोट बोल रहा है. चलो देखो ध्यान से. सी हाउ शुड यू गो अबाउट दिस क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन. A क्रॉस B, बहुत इजीली ये बात हमें समझ में आती है कि 4 into 2 हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में 8 एलिमेंट्स होंगे. और अगर मैं इसके सारे सबसेट्स बनाता तो मेरा आंसर होता 2 raised to the power 8, which is 256. ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया सा तरीका बता रहा हूँ आंसर को पहचानने का एग्जाम में. तो अगर सारे सबसेट्स होते तो मेरा आंसर क्या होता? 256. बट इन्होंने कहा ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, कम से कम 3 एलिमेंट्स होने चाहिए. मतलब हमारा आंसर 256 से छोटा होगा, जो सिर्फ एक है. Without doing any further effort in the exam, I'll go for option number A. That is one way to look at the question, right? तुम्हें अभी क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सोचना भी नहीं पड़ा और तुमने पहचान लिया कि कौन सा सही ऑप्शन है. Is it okay? But now we are not sitting in the exam, we are sitting in the class. We must look into the concepts. ठीक है, तो देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करता हूँ. हालांकि ये कॉन्सेप्ट जब तुम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे देखो आईआईटी में क्वेश्चन जैसे लास्ट क्वेश्चन भी था वो प्रोबेबिलिटी और सेट्स का मिक्सचर था. ये क्वेश्चन सेट्स और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मिक्सचर है. बल्कि अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलूं तो ये कॉम्बिनेशन और सेट्स का मिक्सचर है. ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड सेट्स. ठीक है, अब कॉम्बिनेशन क्या होती है, थोड़ा सा बेसिक चीज, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज इसमें 11th के भी कुछ बच्चे हैं, राइट. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा. जब हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे तो डेफिनेटली जैसे हम कोई भी चीज को फुल डिटेल में करते हैं फुल डिटेल में करेंगे. बट अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगा जितना इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी अगर आप NC0, NC1, NC2, if you add all the elements till NCN, this is always 2 raised to the power n. ठीक है, ये जो 2 raised power n हमें मिलता है ना, बिकॉज n हमारे पास यहाँ पे 8 है, तो ये 2 raised power जो n मिलता है वो यहीं से मिलता है. दैट इज द रीजन व्हाई डू यू गेट दिस फॉर्मूला 2 raised to the power n, टोटल सबसेट्स. ठीक है, अब इसमें हमें कौन कौन सा नहीं चाहिए. अब यहाँ पे n की जगह पे कितना है? 8. 8C0, 8C1, 8C2, 8C3, 8C8 तक, इसलिए आंसर कितना था? 256. बट इन्होंने बोला at least 3 elements. That means 8C0 is not welcome, 8C1 is not allowed, 8C2 is not allowed. We need the sum from here till this place. That means 8C3 से लेके 8C8 तक का सम चाहिए. तो टोटल सम हमारा कितना है? 2 की पावर 8 which is 256. करेंगे क्या?
बस इसको कैलकुलेट करेंगे और टोटल में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, राइट? नाउ फॉर द 11th let me tell you, 11th let me tell you, NCR is always factorial n over factorial r n minus r factorial, right? And factorial is nothing but the multiplication of natural numbers, right? This is only for the 11th 12th I'm sure you have done all that, ठीक है? That means अगर तुम्हारे पास कभी बेटा 3 factorial आ जाए तो इसका मतलब कुछ और नहीं होता है, multiplication of first 3 natural numbers होता है, ठीक है? 7 factorial is multiplication of 7 natural numbers, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है? So 8C0 that is 1, 8C1 that is 8, you apply by this formula you get that, right? 8C2 अगर करोगे तो 8 into 7/2 आ जाएगा, ठीक है? तो मैं सिर्फ इसकी वैल्यू देखता हूँ कितनी आ रही है, बिकॉज मुझे इससे ही मतलब है। ये आ गया 28, 28 plus 8 is 36, 36 plus 1 is 37. So the answer, ये 256 में से मुझे 37 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, we don't need it here, right? तो मैंने अगर इसमें से 37 सब्सट्रैक्ट किया, what do I get? 9 1 2, which is the exact answer. So that is the explanation how would you approach this, ठीक है? 11th वालों को थोड़ा कम समझ में आएगा बिकॉज अभी उन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स नहीं किए, ठीक है? डोंट वरी, इट इज वेरी मच इन योर सिलेबस। व्हेन वी आर डन विद कॉम्बिनेशन उस टाइम पे ये हम डिटेल में इसको भी करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इन दो चीजों को, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये दो चीजें आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, ठीक है? लेट्स सी, ज्यादा नहीं, एक They're taking the screenshot. ओके फाइन, आई विल वेट। Sir, done. That is okay. Let's see the next one. A option is correct, which we have already achieved. Go ahead.